आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको C++ में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें पूरा का पूरा प्रोग्राम प्रोसीजर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता था। सी लैंग्वेज जो कि एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, उसमें आपको याद होगा कि हम अपने पूरे प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शंस की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं और हर फंक्शन का, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये फंक्शन नंबर 1 अगर हम मान लें 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 डिफरेंट फंक्शंस। हर फंक्शन का जो है अपना अपना लोकल डेटा भी है, और क्योंकि वो एक ही प्रोग्राम का पार्ट है तो वो ग्लोबल डेटा के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज टू टाइप ऑफ डेटा, लोकल डेटा एंड ग्लोबल डेटा। बट क्योंकि ये सारे एक प्रोग्राम का पार्ट हैं तो इसलिए काफी सारा ग्लोबल डेटा है जिसको ये सारे फंक्शन इकट्ठे असेस कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझी जा सकती है, क्योंकि जब बहुत बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फंक्शन हो तो ग्लोबल डेटा का साइज भी बढ़ जाता है। तो देयर आर मेनी चांसेस ऑफ एक्सीडेंटल यूज ऑफ डेटा बाय वन फंक्शन। सो इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जब प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा उसकी मेंटेनेंस में जो हम किसी एक फंक्शन में कुछ चेंजेस करेंगे तो देयर आर लॉट मैनी चांसेस कि उसके जो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं वो किसी और फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है। जबकि दूसरी तरफ अब देखिए अलग स्लाइड में, ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है। इसमें आप देख पा रहे हैं जो हमारा पूरा प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, और जो हमारा डेटा भी है वो दो तरह का है, प्राइवेट डेटा एंड पब्लिक डेटा। इनफैक्ट डेटा और फंक्शन हमारे दोनों अलग अलग तरह के हैं। वी हैव प्राइवेट डेटा एंड फंक्शंस एंड देन पब्लिक डेटा एंड फंक्शंस। जबकि पिछली स्लाइड में जहाँ पे हम अपनी प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच को डिस्कस किया, वहां पे ऐसा पब्लिक प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स चांसेस ऑफ accidental use. So difficult maintenance. So अगर हम इस पूरी चीज को समराइज करें कि what are the differences between the procedure oriented and object oriented programming, तो सबसे पहला जो डिफरेंस हमारे सामने आ रहा है कि प्रोग्राम इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, whereas in object oriented program is divided into classes and objects. As हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, most of the data is available at global level problem, but in object oriented programming data is accessible only through member functions, not globally. Now, security of information or data from accidental sharing is missing. जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मेन फोकस है, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा इज द मेन एम्फेसिस। दैट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड मेंटेन। सो ऐसा नहीं है कि सी लैंग्वेज हमने सीख ली, डिफिकल्ट उसका सिंटेक्स वगैरह नहीं है। ये जो हमने लिखा है इज डिफिकल्ट, ये इसलिए है क्योंकि जब बड़े प्रोग्राम्स हैं, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो अंदर आपके प्रोग्राम के अंदर आपने फंक्शंस बना रखे हैं, बट रियल वर्ल्ड में तो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो आपका प्रोग्राम है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, whereas in case of object oriented programming it is relatively easier to design with respect to mental model, because the mental model matches with real world situation. तो इसीलिए जो बाहर हो रहा है रियल वर्ल्ड में, वही चीज हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रोग्राम की जो मेंटेनेंस है दैट इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड, एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज प्रोग्राम इजियर इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग। इसीलिए आज की डेट में जितनी भी प्रोग्रामिंग आप लैंग्वेजेस देख रहे हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है।
आगे है डेटा फ्लोज फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, बिकॉज वहाँ फंक्शंस हैं तो डेटा पैरामीटर्स की फॉर्म में एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन की तरफ जा रहा है। Whereas in case of object-oriented programming, data flows from object to object. And यहाँ पे हम top down approach use कर रहे हैं. That means first we think of the complete problem and then we divide it into modules, and then those modules are divided into functions, and the problem is solved from top to bottom. Top down approaches हम कहते हैं. Whereas in case of object-oriented programming, the program follows bottom up approach. First we identify the classes, then we identify the attributes of classes, then we identify the attributes में data कहते हैं ना, तो data of the classes, and then उस data को manage करने के लिए जो functions चाहिए वो हम identify करते हैं class में. So then we club the related classes together, that makes one subsystem, and then various subsystems मिलके एक पूरा बड़ा सिस्टम बनाते हैं. That means कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. That's why it is known as bottom up approach. तो इस पूरी बैकग्राउंड के साथ चलिए हम एक प्रोग्राम अभी एक बनाते हैं जिसमें प्रोग्राम हम बनाएंगे डेव C++ में. आप कोई भी वर्जन इसका यूज कर सकते हैं. So I have made a program. एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं. आप फाइल में जाएंगे तो दिस इज एडिटर. फर्स्ट मैं आपको इसका एक बता दूं डेव C++ का एनवायरनमेंट कैसा है. तो here you have to click on file, then click on new, and as you are going to make a single program, so you will click on source file. So this is how it looks. डेव C++ में आप स्टार्ट करेंगे include IO stream. यहाँ पे .h हम तब लगाएंगे अगर आप यूज कर रहे हैं टर्बो C++. क्योंकि हम डेव C++ में है तो हमें IO stream ही लिखना है. And then include another header file, that is IO stream .h, and then using namespace आपको include करना है, जिसको हम next जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें आपको बताऊंगा कि ये नेम स्पेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है. फॉर नाउ आपको ये तीनों चीजें ऐड करनी ही करनी है. मैंने गलती से आईओ स्ट्रीम लिख दिया. हियर यू कैन राइट कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए. नाउ we'll start with a class. We are going to make a program to a simple program to get data of a student and display it. Okay, so first, as we are going to get data of a student, we will make a class. So for that you need to have a class keyword. It is followed by the name of class, and then it is followed by two curly braces. तो जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो हमारी हर क्लास है, क्लास के पास अपना डेटा होगा एंड उस डेटा को मैनेज करने के लिए मेथड्स. तो स्टूडेंट के रिगार्डिंग हम तीन चीजें ले लेते हैं. लेट्स दैट स्टूडेंट हैव रोल नंबर, मार्क्स एंड नेम. सो डेटा की सिक्योरिटी के लिए हर C++ की प्रोग्राम में आपको डेटा के पहले एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ेगा. प्राइवेट, we have three types of access specifier. तो प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, जिसका जो मीनिंग है वो हम आगे जाके डिस्कस कर सकते हैं. For now on, just remember that we are using private keyword to secure our data. This means that this data cannot be accessed by any other object. This data can only be accessed by the member functions of this class. So now we are using public keyword. This is another access specifier.
but as it is clear from the name, public means कि this whatever we will write after public, these methods can be accessed by any other object, or it can be accessed outside this class. So let's define a method named getData. So getData को हम ऐसे define कर सकते हैं, cout enter roll number of student, and this will get in roll number variable. Similarly, we can have other values. Name. So name is to be entered in that array specified for that purpose, and then we have marks. So this completes getData method. So this, what is this? This is a function definition. So here we have this is the name of the function. This is starting and this is ending of that function. So after this, we are going to define another function, show data. So cout will just display the data we have got from the getData method. First, we will display roll number. I think I have, it should be like this. Then similarly, we'll display the roll number, then name, and then marks. So this is our class. So you can again see a class always has two parts. First part defines the attributes or data of that class. So we have specified with private access specifier, and then we have defined two methods of this class. Now, apart from this, this class is also sometimes mentioned as user defined data. So we have defined user defined data, that is whose name is student. So let's go in main. So we'll first create an object of type student. Same way like we write here. So int is the predefined system defined data, that is the primary data type. This student we have now defined the student, and so we have created one object s1. So we can call s1. So s1 के through हम इस object के methods को call कर सकते हैं. So first we will call get data, and then we will call
showed it. तो इसको करने के बाद देखते हैं दैट्स इट। और क्योंकि हमने यहाँ पे इंट इसकी रिटर्न टाइप लिखी है तो हमें यहाँ पे लिख देना चाहिए रिटर्न। हालांकि इस चीज का इस हमारे प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज void एंड देन हम इसको हटा सकते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। फॉर कंपाइल यू हैव टू क्लिक हियर, we have to give the name, so yeah, student, yes, I want to replace it, and there is one error. Error is that main must return. So to suppress this error, I can just return 0 and by default ये main जो है एक integer value return करता है. So enter name of student, roll number, let's enter 1, what's name of student, repeat, and marks of student, let's say 90. So here it goes. यहाँ पे roll number 1, name Pradeep and 90. So once again अगर आप इसको देखें इस प्रोग्राम में हमने एक क्लास बनाई है, इसको हमने एक क्लास बनाई है और उस क्लास का डेटा, देन हमने उसके मेथड्स बनाए हैं। मेन में हम जाके हमने उस क्लास की टाइप की एक ऑब्जेक्ट बनाई है और डॉट ऑपरेटर यूज करके उस ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शंस को कॉल किया। और इस तरीके से आप और भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे S2 अगर हमने एक नई क्लास एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ली और S2 में अगेन वी कैन गेट डेटा। सो एक बार आप जब अपनी क्लास बना ली तो यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसको एक बार फिर से हम चला के देख लेते हैं। इस बार हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए। सो व्हाट इज परमिशन डिनाइड। Some silly error we have made. So let's see once more. S2 dot get data, show data, there is no problem. Let's try again. So let's try to find again. Yeah, now it's running fine. One name of student, and then again it is asking for the roll number of second student, 2, and marks. This is the output. So this way you can make simple program in C++. Now to make the program more clear, there is another option कि आप जो अपना method है उसको आप declare करिए क्लास के अंदर, पर हम अपने मेथड को डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर। सो एक बार हम इसको चेंज करते हैं। अभी हमने यहीं पे अपनी क्लास में आप देख पा रहे हैं, यहीं पे हमने क्लास अपने मेथड को डिफाइन किया है क्लास के अंदर। क्लास के अंदर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये देखिए क्लास यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ये खत्म हो रही है। तो इसके अंदर ही हमारे पास पहला मेथड है यहाँ से लेके यहाँ तक,
और इसके अंदर ही हमारा दूसरा मेथड। तो हमारे पास और ऑप्शन है कि हम गेट डेटा को यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करें। तो डिक्लेरेशन जो है वो हमेशा सेमीकोलन से एंड होगी, और ये जो डेफिनेशन है इसको हम यहाँ से उठाएं कंट्रोल एक्स, और इसको हम इस क्लास के बाहर लेके जाएं ऐसे। अब यहाँ पे आपको कंपाइलर को एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब हम क्लास के स्कोप से बाहर जा चुके हैं। सो कंपाइलर को नहीं पता है कि गेट डेटा मेथड है क्या। तो हमें यहाँ पे एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो गेट डेटा मेथड आपने क्लास के बाहर बताया ये किस क्लास का मेंबर है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारे पास क्लास है, लेकिन बड़े प्रोग्राम्स में देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो हमारा मेथड है गेट डेटा, ये किस क्लास का पार्ट है। So first we have to write the name return type, let's say integer, then the class to which it belongs, the student से belong करता है, and then 4 dots. This is scope resolution operator. Now it's fine. Now it will work fine. हमने बता दिया कि हमारा जो get data method है उसकी return type integer है, जो पहले थी वो अभी भी है, क्योंकि by default ये integer रहता तो integer ही लिख सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, but for clarity we can write integer student class name हो गया, और scope resolution, this is known as scope resolution operator। तो आप यहाँ पे अपनी रेफरेंस के लिए लिख के रख सकते हैं जो डबल डॉट्स है, दिस इज scope resolution operator। सिमिलरली जो हमारा दूसरा शो डेटा मेथड है उसको भी हम क्लास से बाहर ले जाते हैं। तो वंस अगेन यहाँ से उठाया हमने इसको, यहाँ पे सिंपल डिक्लेरेशन आपको अंदर करनी ही पड़ेगी। तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी क्लास ये अब आपको ज्यादा क्लियर दिख रही है। देखिए क्लास यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म। तो इसमें आप देख रहे हैं ये इसका डेटा पार्ट है और ये उसके 2 मेथड्स है, हमने सिर्फ डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे भी अब ये डेफिनेशन नहीं रही, ये अब बन गई है declaration। Okay, so this is again declaration। And this is function definition। अब जो शो डेटा को भी हम यहाँ पे एक बार फिर से आपको बताना पड़ेगा कि जो शो डेटा है वो एक इंटीजर रिटर्न टाइप है, किस क्लास का ये मेंबर है, और यहाँ पे उसका नाम एंड हियर आप उसका जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है उसको इस तरीके से। ठीक, तो अब आप प्रोग्राम को चला के देख सकते हैं। So it works same way, roll number of student is 1, name of student is Deep, and marks of student 98, and here we have the data displayed। second student के लिए 2, name of student is Lucky, and marks of student 78। It works the same way। So in this video lecture हमने बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि जो इनिशियली हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स थे उसमें किस तरह से पूरा प्रोग्राम फंक्शंस की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता था, और क्योंकि वो सारे के सारे फंक्शन ग्लोबल डेटा को यूज करते थे इसलिए चांसेस ऑफ एक्सीडेंटल यूज था, मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट थी। जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है
उसमें हमारे पास ये एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं कि डेटा या फंक्शंस प्राइवेट हैं या वो पब्लिक हैं, और इस डेटा तक पहुंचने का रास्ता हमारे पास मेथड्स के थ्रू ही है। और ये डेटा और मेथड्स हम क्लास में एक बार डिफाइन कर देते हैं एंड देन वी कैन क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमने कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस आपसे डिस्कस किए कि कैसे प्रोग्राम प्रोसीजर ओरिएंटेड में प्रोग्राम फंक्शंस की फॉर्म में होता है, यहाँ पे क्लासेस की फॉर्म में है। वहाँ पे मोस्ट ऑफ प्रोसीजर में मोस्ट ऑफ द डेटा ग्लोबल लेवल पे है, यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर दिया गया है। सिक्योरिटी ऑफ डेटा, जो एक्सीडेंटल शेयरिंग से जो सिक्योरिटी चाहिए वो यहाँ पे मिसिंग है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वही उसकी मेन एम्फेसिस है। और ये डिफिकल्ट टू डिजाइन है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, बिकॉज रियल वर्ल्ड में कुछ और है, ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जबकि जो यहाँ पे अंदर जो हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ भी करते हैं दैट इज थ्रू फंक्शंस। So mental model is different as compared to what we implement in the program. Whereas in object-oriented programming, it is relatively easier to design and maintain. Maintenance of large program becomes very difficult in procedure-oriented programming, whereas the maintenance of program in object-oriented programming is easier. And then last one was कि जो procedure oriented programming में top down approach use करते हैं, जबकि object oriented programming में हम bottom up approach use करते हैं। और लास्ट में हमने ये इस प्रोग्राम के बारे में आपको सिखाया। इट वाज अ सिंपल प्रोग्राम। आई होप इस वीडियो से आपको प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस का जो इनिशियल एक लेवल हम कह सकते हैं उसको समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।